Hello everyone, I hope you are fine, beta. Good afternoon, all of you. Today we are starting our next class of the gravitation. So in last class we discussed beta different type of the velocities take place when we are ejecting any body from the earth's surface. Then this one, first one we have discussed beta escape velocity. Escape velocity, that is a velocity which is required to ejecting any body from the earth gravitational field. Today we will discuss our there orbital velocity. What is orbital velocity? That is a velocity which is required to put any satellite in the earth. Okay, कि किसी satellite को earth के orbit में put करना, that it will be start revolving around the earth, that is known as the orbital velocity. Okay, for example, this one our earth, then we are putting any satellite in the orbit of the earth. यहाँ से यहाँ तक बेटा take out from the earth gravitational field, then we will call it escape velocity. कि अर्थ की सरफेस से उसको बाहर निकालना, अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से. After coming out from this one, that body will start revolving surrounding this one, then this one is known as the orbital velocity. इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए किसी सैटेलाइट को जिस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी. Okay, so here we can write that velocity which is required to put a satellite in अर्थ ऑर्बिट. अर्थ के ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को पुट करने के लिए जिस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी. ओके, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? जिससे एस्केप हो जाए, जिस वेलोसिटी के साथ वो इजेक्ट आउट हो जाए ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं. सो फ्रॉम हियर स्टार्टिंग रिवॉल्विंग अराउंड दिस वन, सराउंडिंग इन दिस वन इन एनी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, देन वी विल कॉल इट ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो हाउ वी कैन फाइंड दिस वन वेलोसिटी बेटा? एज रिवॉल्यूशन इज टेक प्लेस, so during this one in a circular path any bodies are revolving, then one force will be act, that we will call it centripetal force. Already we discussed beta in second unit centripetal force. centripetal force क्या होता है कि वो force बेटा जब कोई body क्या होती है circular path में revolve करती है, that force is required to move any body in a circular path, that is known as the centripetal force. So this one centripetal force we can write there mv square by r. I hope you understood beta about this one force, mv square by r. M is a mass of that body which is revolving around the earth, v is the velocity by which velocity it is moving there, and r is our radius only. Okay, so after this one, this velocity by which velocity is revolving around this one, that is known as your orbital velocity. And this body, one force is acting, this one second is acting along this one, revolution is take place, that is known as the gravitational force. Okay, now we are taking beta, let a body of mass m is start revolving in orbit in circular path, orbit of earth of mass capital M and radius of earth we are taking there what? R only. Radius क्या हमारी अर्थ की? And that path from here to there, let this one is r is a radius and this one distance at the h height. Okay, कि जो ये body है किस height पे है? h height पे ले रही है. So total distance from here to there we can write there beta h plus r, and this one we are writing there small r. Okay, so here we can write this one distance of body, distance of body from earth is r. We are assuming there r. If body will be very near to the surface of the earth,
then we can neglect this one height beta, then we can write the small r equal to capital R. Okay, then later on we will use this one case. First we are taking their small r only, total distance. So let a body of mass m start revolving in a orbit of the earth. Earth of mass, earth का mass हम क्या लेके चल रहे capital M. Distance of the body from the earth is r is taking, and that body is revolving with velocity. Suppose VO is velocity by which this body is revolving around अर्थ. ओके, हमने क्या अज्यूम किया है कि वीओ वेलोसिटी है जिसके अलोंग क्या है ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है. दैट वीओ बॉडी वी विल कॉल इट ऑर्बिटल वेलोसिटी. यही वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है. सो हाउ यू कैन फाइंड दिस वन वेलोसिटी बेटा? सो नाउ gravitational force will be act on body due to earth. Okay, so how much force will be there? Then we know that about the gravitational universal law. If two body masses body is there, then force acting between them we will call it gravitation force, and this one force is equal to g, mass of both body, and distance between them, that is their r square. Okay, this one we can write their first one equation, gravitation force. Now due to circular path, circular orbit we can say beta of body, so then centripetal force will be there. Centripetal force will act on it. Okay, and this one force how much will be there? This one force we know about this one, that is mv square by r. This one is our centripetal force. कि कोई भी बॉडी बेटा रिवॉल्व कर रही है तो उसके लिए एक फोर्स हमेशा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स, और दूसरा फोर्स जिसकी वजह से वो मूव कर रही है दैट इज आवर ग्रेविटेशन फोर्स, जो उन दोनों बॉडी के बीच में लग रहा है. अगर इसकी जगह मास की जगह चार्ज अगर मूव करते तो क्या होता? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता, और जो कौन बैलेंस करता है उसको mv स्क्वायर r. अगर मैग्नेट रिवॉल्व करे तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसको कौन बैलेंस करता है? आपका सेंट्रिपिटल फोर्स. सो हियर वी कैन राइट देयर दिस one your first equation, this one our second equation. So by using first and second equation, so we can write there this one equal to this one. So here we can write gm by your r square, and here mv square by r. And which one velocity is acting there? That's why this velocity, by which velocity this body is revolving around the earth, and that one velocity is our v naught. किस velocity के साथ revolve कर रही है? v naught. v naught means orbital velocity. That's why here we will use their v naught. This one velocity only we have to find out. So by using their this m to m cancel out, 1 r to 1 r cancel out. So here left beta gm by your r equal to your v naught square. This only left na. See here, m to m cancel out, 1 r to 1 r cancel out, so there gm, here r left, that is equal to v naught square. So after this one here we can write there v naught equal to under root gm by r. Okay, where r equal to your r plus h. Now small r क्या है? R is capital R is our radius, where capital R क्या है? Radius of the earth. But radius of earth, and your small h is height of body. ओके, जो बॉडी इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है किस हाइट पे? अर्थ से h हाइट पे है. So small r we can write there capital R plus h. So from here if your h is very less than your r, means body lie near the earth surface, near
the earth surface, so here we can write v naught equal to your gm by your कैपिटल आर, कि अगर हाइट बहुत ही कम है बेटा, बॉडी अगर सरफेस के नियर लाई कर रही है तो हम हाइट को नेग्लेक्ट कर देंगे, वी कैन राइट देयर स्मॉल आर इक्वल टू योर कैपिटल आर। तो इस कंडीशन पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट स्मॉल आर इज सिमिलर टू दी कैपिटल आर। सो दिस वन रिलेशन वी कैन राइट देयर वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड बेटा दिस वन योर ऑर्बिटल वेलोसिटी बाय विच एनी बॉडी इज मूविंग देयर। सो एज we are taking beta this one constant, here multiply and divide by your capital R. V naught our came here, V naught equal to under root G M by your R. So after multiply by R, multiply and divide and multiplying by R. So V naught we can write there G M by R into your R by R. दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो दिस वन रिलेशन वी कैन राइट हियर अंडर रूट जी एम बाई योर आर स्क्वायर आर। सो स्क्वायर दिस वन टर्म वी कैन राइट बेटा स्मॉल जी, यस ना, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। सो दिस वन फैक्टर वी कैन राइट देयर स्मॉल जी। सो वी नॉट विल बी कम आउट हियर अंडर रूट जी आर। I hope you understood beta, small g is acceleration due to gravity, that is 9.8 meter per second square, and r is our radius of the earth 6400 kilometer. As we are putting this one value beta, so orbital velocity will be come there, it will be a 7.89 kilometer per second. This one our orbital velocity by which any body will be move, then it will be take the circular path around the earth। कि कोई भी अगर सैटेलाइट हम क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, then after the escaping out from the earth gravitational field, then satellite will start revolving around the earth। अर्थ के चारों तरफ रिवोल्व करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे रिवोल्व करता है वो जिस वेलोसिटी के साथ रिवोल्व करता है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कि कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में रिवोल्व कर रहा है बाय विच वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जैसे हम यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ गई बेटा, जी आर, ये सिर्फ किसके लिए, हमारी अर्थ के लिए है बेटा। एज वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ जी फॉर द अर्थ एंड आर इज अ रेडियस ऑफ द अर्थ, इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वेलोसिटी आती है कि इस वेलोसिटी के साथ कोई भी सैटेलाइट क्या है, रिवोल्व करता है अर्थ के चारों तरफ। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा बोथ ऑफ द वेलोसिटी। फर्स्ट वी डिस्कस्ड देयर एस्केप वेलोसिटी, सेकंड ईयर ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या आई थी, yesterday you have done na escape velocity and second one here orbital velocity। अब हमने दोनों डिस्कस की। एस्केप वेलोसिटी जो क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकाल दे किसी बॉडी को, एस्केप वेलोसिटी। जो उसको ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाए उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो दिस वन हियर VE, this one here U। So yesterday we solved this one, then it will be under root 2GR। This one came and today we solved this one, then it came here under root GR। ओके, सो दिस वन योर रिलेशन बिटवीन देम, दोनों में रिलेशन क्या आएगा बेटा, VE इक्वल टू अंडर रूट 2V नोट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड योर एस्केप वेलोसिटी, orbital velocity and escape velocity, this is the relation between them। So this one relation we can write like this one। I hope you understood better both type of the velocity। During the ejecting any satellite from our earth surface, then both velocity will be required to ejecting any earth surface, bodies earth की surface से satellite को eject करने में, then required escape velocity, eject करके उसको revolve करवाने में orbit को, then need their orbital velocity। Okay, now next is we will do beta, one question is there related with this one velocity। So determine the escape velocity of the body from the moon। We have to find out escape velocity moon से, if we are taking not for earth, moon we are taking। अगर हम मून लेके चल रहे हैं, दिस वन आवर मून, ये कह रहा है मून से हमें एस्केप वेलोसिटी कितनी लगेगी इफ
टेक द मून ऑफ द यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस इज दिस वन। अगर हम मून को क्या यूनिफॉर्म स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं जिसकी रेडियस आपको क्या गिवन है, r इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻⁶ मीटर गिवन है, एंड मास ऑफ द मून इज गिवन हियर, मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10⁻21 kg। अब हमने ये किया था तो इसका हमें पता है दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, डिपेंड अपॉन दैट मास from which we are ejecting that body from that surface. Okay, so capital G is this one. So we have to find out escape velocity. Escape velocity क्या होती है, that is √2 gm by our r। क्लियर ना, हमने ये कन्वर्ट किया था बेटा स्मॉल जी के अंदर, स्मॉल जी वी आर टेकिंग ओनली फॉर रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ वी आर अज्यूमिंग, देन वी कैन कन्वर्ट देयर स्मॉल जी, बट हियर दिस वन योर r is given, रेडियस ऑफ moon, mass of moon, both are given, then we will put in this one value, then escape velocity will be there कि इस escape velocity के साथ अगर हम इजेक्ट करेंगे तो बॉडी क्या है वापस मून के ऊपर नहीं आएगी। सो कैपिटल G will be remain same for all the massless body in our complete universe. That's why we are calling it universal gravitational constant, 6.67 into 10⁻⁻11, and here mass of the moon is given already, 1.76 into 10⁻⁶ meter will be there, and divide by this one 7.36 into 10⁻22 kg. I hope you understood beta. When we will solve this one, convert all terms in your SI unit only, then solve this one, then comment your answer beta, how much velocity will be there on the moon. ओके, लाइक दिस वन, अर्थ के ऊपर जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सेम एज इफ मास एंड रेडियस ऑफ द मून इज गिवन, देन हाउ मच वेलोसिटी विल बी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एनी बॉडी फ्रॉम द मून ग्रेविटेशनल फील्ड। मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए कम से कम क्या वेलोसिटी रिक्वायरमेंट होगी कि बॉडी क्या वापस मून की सरफेस पे ना आए। सो इसको सोल्व करना, तो कमेंट योर आंसर, देन व्हाट इज आंसर कमिंग ऑफ दिस एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट बेटा वो सिस्टम होता है बाय विच एनी बॉडी इज द वी आर कम्युनिकेट with each other. Okay, satellite, that is by which we can communicate. Here also we are using satellite system only. So how much time period will be required during the satellite? They are acting your orbital velocity, orbital velocity by which it is the revolving around the earth, जिसके कारण क्या है ये अर्थ के चारों तरफ क्या करता है रिवॉल्व करता है। This one velocity we will call it orbital velocity if this one is our अर्थ, दिस आवर सैटेलाइट। ओके, तो ये कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाने के लिए टाइम पीरियड की कितनी रिक्वायरमेंट होगी इफ दिस वन इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर, इफ दिस सैटेलाइट इज वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इफ r is radius, if r is radius, r is radius of earth, r is radius of the earth, so how much here time period will be there? So as we know r is radius and satellite is near to the earth, if earth के near होगी so here h will be less than r, so small r we can write there equal to capital R. So here we can write that t is equal to, we know about this one, velocity is equal to distance upon time. So here time we can write there displacement per unit here velocity. Okay, and displacement here, total displacement here, from here to there, that distance covered by this one, distance taken during this one satellite. Wait, oh. Distance per unit velocity. So here how much here distance will be covered during this complete path. If r is a radius of this one, then you can write there equal to circumference. Length कितनी हो जाती है सर्कल के अंदर equal to circumference. So circumference we can write there 2 pi r,
2 पाई आर। ओके, अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं बेटा, हाइट इज वेरी नियर टू द सरफेस, दैट्स व्हाई वी कैन राइट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अगर नहीं है स्मॉल lie at the h height, then we will use their small r, and small r we can write there your capital R plus your h only. This one is equal to small r. So here we can write 2 pi r divide by velocity. Which velocity? Orbital velocity. इसी velocity के according ही revolve कर रहे हैं, by this one velocity only revolving around this one. That's why here we will use your orbital velocity. So here time period we can write that t is equal to your 2 pi, r is equal to your r plus h and divide by v naught. अब हमारा v naught क्या आया था? v naught is equal to under root gm by your r and r equal to your small r. Small r अगर हम लेके चल रहे हैं then it will be your capital R plus h, radius of the earth plus height of the satellite. So v naught equal to your this one. Now put here, then time period we can write there r plus h divide by under root gm r plus h. Clear? This one came. Okay, now we can write this one upper side. So here we can write there 2 pi r plus h, then take this one your under root r plus h, then here we can write there under root gm. This one is our time period. What is time period? Time taken by the satellite to complete one revolution. Okay, time period, it is time taken by satellite to complete one revolution. कि अगर आपका कोई सैटेलाइट है वो इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करता है बेटा, वन रिवॉल्यूशन के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू योर टाइम पीरियड ओनली. इसको क्या बोलते हैं? हम टाइम पीरियड बोलते हैं. सो टाइम पीरियड को सोल्व करेंगे. सो हियर वी आर यूजिंग देयर टी इज इक्वल टू योर टोटल path of this one, total length along the circular path, divide by which velocity is taking this circular path, that we will call it orbital velocity. So orbital velocity we will use this one here under root gm by r plus h. So total length here 2 pi r equal to r plus h. So this one here will be time period. Agar body completely near to the surface of the earth, so here we can assume there your capital R equal to our small r only. So during this one your time period, in that case t is equal to 2 pi capital R your under root gm by your r only. So your time period will become equal to 2 pi r under root gm under root r only. This one your time period, you can solve this one your 1 under root 2. Okay, 3 by 2 will be there. इसको सोल्व करने के बाद तो हमारा ये क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा ऑफ द सैटेलाइट, की सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो कितना टाइम लेती है. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा हाउ वी कैन फाइंड देयर टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी बाय विच सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. Okay, so in next lecture beta we will discuss there about the energy of the satellite, how much energy is taken during this one complete revolution of the satellite around the earth, and we will discuss beta Kepler's law also, 3 Kepler's law. Okay, I hope you understood beta. Thank you for watching today our video.